Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today is the third lecture on changes in foreign exchange rates, and we are going to solve a comprehensive problem in this lecture. So this comprehensive problem is in continuation of the previous examples that were discussed in the previous lecture. So mainly we are going to do translation of foreign currency transactions in this problem. So what is this? When an entity enters into a transaction denominated in a currency other than its functional currency, that transaction must be translated into functional currency before it is recorded. So record करने से पहले उस foreign currency की अमाउंट को हमें ट्रांसलेट कर लेना चाहिए फंक्शनल करेंसी में। ये हम पहले अच्छे तरीके से इसको समझ चुके हैं। तो रिवाइज करते हुए इसमें अब बताना ये है कि हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में टोटल 3 स्टेप्स इसके देखे हैं, 3 मराहिल देखे हैं जिन मुख्तलिफ मराहिल पे 3 एंट्रीज करना पड़ती हैं, जर्नल एंट्रीज करना पड़ती हैं एक अकाउंटेंट को। सो वो क्या एंट्रीज हैं, उन एंट्रीज को भी देखेंगे और जो है उसके मुख्तलिफ मराहिल को डिस्कस करते हैं। तो इसमें पहला मरहला है इनिशियल रिकग्निशन ऑफ द फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, यानी इब्तदाई तौर पे जो ही एक ट्रांजैक्शन होती है उस वक्त फॉरेन करेंसी और वो ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में होती है और फंक्शनल करेंसी में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ऑन इनिशियल रिकग्निशन ए फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द ऑर्गेनाइजेशंस फंक्शनल करेंसी by applying the spot exchange rate between the functional currency and the foreign currency. So इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरा स्टेप क्या होता है वो ये है कि अगर फ़र्ज़ करें एक ट्रांजैक्शन हुई और बिफोर द पेमेंट डेट, पेमेंट अभी नहीं की, पेमेंट होने से पहले जो है वो रिपोर्टिंग डेट आ जाती है, यानी कि ईयर एंड हो जाता है और कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना होती हैं। तो स्टैंडर्ड जो है इस बात को जो है वो रिक्वायर करता है कि उस एंड डेट पे जो भी स्पॉट एक्सचेंज रेट होगा उसके मुताबिक दोबारा से ट्रांसलेट किया जाए और ऑब्वियसली दोबारा ट्रांसलेट करने के दौरान जो है कमी बेशी कुछ एक्सचेंज रेट की हो सकती है, तो उसके नतीजे में जो है जो भी कोई गेन और लॉस होगा उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इसको हम कहते हैं अनसेटल्ड ट्रांजैक्शंस। सो फॉरेन करेंसी आइटम्स अपीयरिंग इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन शुड बी ट्रांसलेटेड एज फॉलोज। इसके अंदर क्या होता है कि मॉनेटरी आइटम्स के बारे में स्टैंडर्ड वाज़ेह तौर पे बताता है कि मॉनेटरी आइटम्स शुड बी ट्रांसलेटेड यूजिंग द स्पॉट एक्सचेंज रेट एट द एंड ऑफ द पीरियड व्हिच इज द रिपोर्टिंग डेट। एंड रिमेंबर द मॉनेटरी आइटम्स इंक्लूड करेंसी हेल्ड एंड एसेट्स और लायबिलिटी टू बी रिसीव्ड और पेड इन करेंसी। तो इसके अंदर शामिल हैं, एग्जांपल्स हैं, कैश है, रिसीवेबल्स हैं, पेएबल्स हैं और लोन्स इसके अंदर शामिल हैं। चलिए अब वी कम टू द थर्ड step which is to be recorded is settled transactions, which means that this is the time when we are going to make the payment of the foreign transaction. When cash settlement occurs, the payment received from a foreign customer, the settled amount should be translated using the spot exchange rate on the settlement date. So if this amount differs from the recorded when the transaction occurred, for example, when the transaction occurred, the company recorded receivables debit and sales credit, and that receivable amount is different from one that is calculated just before I have discussed in the previous point on the settlement date. If there is some difference, that difference will be there will be an exchange rate difference which is taken to the profit or loss account of the period in which it was occurred. So now I have gone through all these 3 steps. We have discussed that there would be 3 entries, 3 conversions, 3 entries. So this is a problem in which all these 3 steps have been discussed. So this is a comprehensive problem, and let's see how this happens. First of all, we are coming to the first step, which is initial recognition. Before I go to the solution of the problem, let's see what is the question. On 1st July 2000, organization A, which reports in dollars, purchased an asset. So I stop here to tell you that dollar is the functional currency, and most likely dollar is the presentation currency. So
as it is written that the company reports in dollars. So this shows that this is the presentation currency of the company. So it normally purchases assets in any other currency. So it has purchased from an organization which reports in euros for 200,000 euros. So payment was made on 31st December 2000, and okay, and the entity's year end is September 30. So you see that there are three dates available: 1st July, on which the asset was purchased; 30th September, which is the reporting date; and the 1st December is the 31st December, which is the payment date. Hopefully there is some mistake in the example. This is 31st December instead of 1st December. So there is no issue in the dates. So we will be discussing according to the correct dates. So requirement of question is, how will this transaction be recorded in the books of A organization? So as we have discussed, three steps. The first step is initial recognition of the transaction. So we will see the spot rate on the 1st July 2000, which is 1.50 euro, $1.50 to euro. So if we want to convert 200,000 euros to the dollars, we will divide 200,000 to 1.50, and we will get the dollar amount in 133,333. So the organization A has converted the euros into the dollars, and obviously it will going to record this transaction, debit the asset and credit the liability. So this is the first step, and the organization has recorded the journal entry in its records at 1st July 2000, at which the spot exchange rate was 1.50. Now we come to the second step, which is the reporting date and monetary items. The standard says that the monetary items should be translated using the spot exchange rate at the end of the period, which is the reporting date. So we read this by A's year end. The liability has still not been settled. Yes, the liability has not been settled. So IAS requires that the foreign currency monetary items should be translated using the closing date at the entity's year end, and that non-monetary items should be translated using the exchange rate at the date of transaction. So इसको बाद में डिस्कस करते हैं इस पैराग्राफ में कि नॉन मॉनेटरी आइटम्स का क्या होगा, जो कि अभी फिलहाल हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है. हम अभी सिर्फ मॉनेटरी आइटम की बात ही कर रहे हैं. तो दूसरे पैराग्राफ की तरफ आते हैं. The asset is itself is a non-monetary item. It is already included in the books of A using the rate at the date of the transaction. So there is no need for any adjustment on the asset. So the liability, however, is a monetary item, and so it must be retranslated at the closing date as follows. So we have been provided the rate at this date, which is 1 point. Let me check again. At the closing date, the rate is 1.40. So we have divided 200,000 by 1.40, and this gives rise to $142,857. So we have done again the same steps. First is the conversion of the euros into the dollars, and now we have observed that the previous transaction was recorded at 133,333. So we have recorded that our liability was 133,333, but now on the reporting date it comes up to be 142,857. So our liability has been increased by 9,524. So this 9,524 is a type of loss for us. So to increase the liability at the year end, our liability has been increased by 9,524. So I come to the credit side first. This is a better way to
राइट डाउन आवर एंट्री। ये जो है अकाउंटेंट्स के लिए एक ज़रा मैं आपको तरीका बताता चलूँ स्टूडेंट्स के लिए समझने के लिए कि सबसे पहले आप लिखें कि हमारी लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ कर गई है 9524 से, तो लिहाजा आप सबसे पहले क्रेडिट साइड को रिकॉर्ड करना है। क्रेडिट साइड को आपने 9524 से रिकॉर्ड कर लिया और आपके पास अब रह गया डेबिट। तो डेबिट जो होता है या तो वो एक्सपेंसेस होते हैं या लॉसेस होते हैं, तो ये लॉस है। सो दिस लॉस इज नोन एज द मैचिंग डेबिट रिप्रेजेंट्स अ लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ foreign exchange, and IAS 21 requires this should be taken to profit or loss account. So the year-end journal entry in respect of this transaction is profit and loss account debit and the liability credit. The author has written debit income statement has been debited. This is also correct, and this is one way to write down profit and loss account. So this was the second step at the reporting date. Now we come to the third step, which is the settlement date. So settlement means when the payment is going to be made. So by the settlement date, exchange rate has moved again, and A is obliged to pay 200,000 euros on December 31. So cost of this to A is again the what would be the available spot rate. 200,000 euros divided by 1.45 gives rise to $137,931. However, the liability recorded in the books of accounts was 142,857. ये हम प्रीवियस स्लाइड में इसको देखा है कि हमने अपनी लाइबिलिटी को एडजस्ट कर लिया था। प्रीवियस लाइबिलिटी हमारी जितनी भी थी हमने क्लोजिंग डेट के ऊपर अपनी लाइबिलिटी को दोबारा एडजस्ट कर लिया था जिस 142,857 के मुताबिक। तो अब हमने जबकि देखा तो पेमेंट डेट पे दोबारा इसके अंदर तब्दीली आ गई है और सो द ऑर्गेनाइजेशन रियलाइज्ड ए गेन ऑन एक्सचेंज। तो इसको भी अब हम देख लेते हैं कि ये गेन हुआ। उसी तरीके से देखें जो कि मैंने प्रीवियसली बताया था एंट्री करने का आसान तरीका कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लाइबिलिटी कितनी है 142,857। पहले आपने लाइबिलिटी को डेबिट किया। एज यू ऑल नो देयर इज decrease in liability, and decreases in liabilities is recorded on debit side, and we are obliged to make the payment of $137,931 in our functional currency. So obviously if we are going to make the balance this transaction, so we will have to give a credit on the for the profit or loss account, which is 4,926. So this is all about dear students. इस एग्जाम्पल में इस प्रॉब्लम के अंदर हमने जो है वो तीन जो है वो इसके मराहल देखे और इसी वजह से मैंने इसको कहा कि ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम है। इसके अंदर जो है तीनों स्टेप्स में क्या क्या एंट्री होनी चाहिए वो एक ही इलस्ट्रेशन में एक ही प्रॉब्लम के अंदर आपने उसको देख लिया। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। So we will be meeting in the next lecture with some new topic. So till then, Allah Hafiz.